the arrival of the honorable judges. Mobile phones may be switched off or may be kept on silent mode. No clapping, please. Thank you.
May I most humbly seek the leave of His Lordship, the Honorable, the Acting Chief Justice, High Court at Calcutta, to commence the proceedings. Yes, yes. May I have Your Lordship's leave to read out the notification issued by the Government of India. Yes. Number K 11015/03/2025 US.I. Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, Appointments Division, Jaisalmer House, 26 Mansingh Road, New Delhi, 110011, dated 7th August 2026. Notification. In exercise of the power conferred by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Sarvasri Aryak Dutt, Autorup Banerjee, Sandeep Kumar De, Partho Pratim Roy, Shodip Deb, Anuj Singh, Arjun Ray Mukherjee, and Rishad Medora to be additional judges of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date they assume charge of their respective offices. Signed, Jagannath Srinivasan, Joint Secretary to the Government of India. May I have Your Lordship's leave to read out the authorization made by His Excellency, the Governor, West Bengal, in favor of Your Lordship to administer the oath of office to the additional judges designate. Yes. Governor of West Bengal. Order. By virtue of power vested in me by Article 219 of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, do hereby appoint Honorable Justice Tapabroto Chakraborty, the Acting Chief Justice of Calcutta High Court, or any other senior-most honorable judge of Calcutta High Court, before whom, first, Shri Aryak Dutt, second, Shri Autorup Banerjee, third, Shri Sandeep Kumar De, fourth, Shri Partho Pratim Roy, fifth, Shri Sudip Deb, sixth, Shri Anuj Singh, seventh, Shri Arjun Ray Mukherjee, eighth, Shri Rishad Medora, shall make and subscribe an oath or affirmation in the same order according to the form set out in Schedule 3 of the Constitution of India before they enter upon their offices of the additional judges in the Calcutta High Court. Signed, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, dated 8th August 2026. May I have Your Lordship's leave to read out the warrant of appointment issued by Her Excellency, the President of India, in favor of Shri Aryak Datta, Additional Judge Designate. Yes. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Aryak Dutt to be an additional judge of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 7th day of August in the year 2026, 16th Shravan, 1948 Sak, in the 77th year of the Republic of India, signed, President of India. May I now most humbly request Your Lordship to administer the oath of office to Shri Aryak Dutt as the Honorable Additional Judge of the High Court at Calcutta.
I, Arjok Dotto, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, having been appointed as the additional judge of the High Court at Calcutta, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as That- by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge, and judgment and to the best of my ability, knowledge, and judgment perform the duties of my office Perform without the- fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Yes. May I have your lordship's leave to read out the warrant of appointment issued by Her Excellency the President of India in favor of Sri Otharup Banerjee, Additional Judge Designate. Yes. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Sri Otharup Banerjee to be an additional judge of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 7th day of August in the year 2026, 16th Shravan, 1948 Shaka, in the 77th year of the Republic of India. Signed, the President of India. May I now most humbly request your lordship to administer oath of office to Sri Otharup Banerjee as the Honorable Additional Judge of the High Court at Calcutta. I, Otharup Banerjee, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, having been appointed as additional judge of High Court Calcutta, do swear in the name of God do swear in the name of God
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. May I have your lordship's leave to read out the warrant of appointment issued by Her Excellency the President of India in favor of Sri Sandeep Kumar De, Additional Judge Designate. Yes. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Sri Sandeep Kumar De to be an additional judge of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 7th day of August in the year 2026, 16th Shravan, 1948 Saka, in the 77th year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now most humbly request your lordship to administer the oath of office to Sri Sandeep Kumar De as the Honorable Additional Judge of the High Court at Calcutta. I, Sandeep Kumar De, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold
the Constitution and the laws. May I have your lordship's leave to read out the warrant of appointment issued by Her Excellency, the President of India, in favor of Sri Partho Pratim Roy, Additional Judge Designate. Yes. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Sri Partho Pratim Roy to be an additional judge of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 7th day of August in the year 2026, 16th Shravan, 1948 Shaka, in the 77th year of the Republic of India. May I now most humbly request your lordship to administer oath of office to Sri Partho Pratim Roy as the Honorable Additional Judge of the High Court at Calcutta. I, Partho Pratim Roy, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws.
May I have your lordship's leave to read out the warrant of appointment issued by Her Excellency the President of India in favor of Shri Sudeep Deb, Additional Judge Designate. Yes. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Sudeep Deb to be an additional judge of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 7th day of August in the year 2026, 16th Shravan, 1948 Sakha, in the 77th year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now most humbly request your lordship to administer oath of office to Shri Sudeep Deb as the Honorable Additional Judge of the High Court at Calcutta. I, Sudeep Deb, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. বসো। May I have your lordship's leave to read out the warrant of appointment issued by Her Excellency the President of India in favor of Shri Anuj Singh, Additional Judge Designate. Yes. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Anuj Singh to be an additional judge of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 7th day of August in the year 2026, 16th Shravan, 1948 Sakha, in the 77th year of the Republic of India. Signed, President of India.
May I now most humbly request your lordship to administer the oath of office to Shri Anuj Singh as the Honorable Additional Judge of the High Court at Calcutta. Yes. I, Anuj Singh, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, having been appointed as the additional judge of the High Court at Calcutta, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. May I have your lordship's leave to read out the warrant of appointment issued by Her Excellency the President of India in favor of Shri Arjun Ray Mukherjee, Additional Judge Designate. Yes. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Arjun Ray Mukherjee to be an additional judge of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 7th day of August in the year 2026, 16th Shravan, 1948 Saka, in the 77th year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now most humbly request your lordship to administer oath of office to Shri Arjun Ray Mukherjee as the Honorable Additional Judge of the High Court at Calcutta. I, I, Arjun Rai Mukherjee, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office
without fear or favor, affection, or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. May I have your lordship's leave to read out the warrant of appointment issued by Her Excellency the President of India in favor of Shri Rishad Medora, Additional Judge Designate. Yes. By virtue of the power vested in me by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Rishad Medora to be an additional judge of the Calcutta High Court for a period of 2 years with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 7th day of August in the year 2026, 16th Shravan 1948 Saka, in the 77th year of the Republic of India, signed President of India. May I now most humbly request your lordship to administer the oath of office to Shri Rishad Medora as the Honorable Additional Judge of the High Court at Calcutta. Yes. I, I, Rishad Medora, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, having been appointed as additional judge of the High Court at Calcutta, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection, or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws.
May I now request the learned Additional Solicitor General to deliver his address. I extend my warmest greetings to my Lord, the Honorable Acting Chief Justice, the other honorable judges of this honorable court, including the newly appointed honorable judges, members of the registry, the learned additional advocate generals, members, presidents, and secretaries of the respective wings of the bar, family members of the honorable newly appointed judges, members of my fraternity. Today, 8 honorable judges, being the dispensers of justice, have joined the ranks of this preeminent honorable court. The honorable judges who have been sworn in today represent the unwavering spirit of justice that emanates our constitutional democracy. The Honorable High Court at Calcutta occupies a unique and distinguished position in the history of our country. It is an institution whose contribution to the development of Indian jurisprudence, constitutional governance, and the rule of law is both profound and enduring. To be entrusted with the office of an honorable judge of this honorable court is therefore not merely an appointment. It is the assumption of a solemn constitutional responsibility and an inheritance of a remarkable judicial tradition. My lords have risen by the dint of their hard work, determination, and true grit to find a place of pride in Indian judicial system. My lords bring with them a ground-level understanding of the problems that besets a common man who seeks justice. They truly are 8 jewels who will contribute greatly to the growth of the oldest honorable High Court of our country. I welcome them on behalf of the learned councils representing the Union of India before this honorable court. With this, I end my speech and convey my best wishes to the newly appointed honorable judges of this honorable court. My gratitude. May I now request the learned secretary, Bar Library Club, to deliver his address? I'm sorry. May I request the learned Additional Advocate General to deliver his address, please? My apologies. My Lord, the Honorable Acting Chief Justice and the Honorable Companion Justices of this Honorable Court, my friends and colleagues at the bar, friends and families of the Honorable Judges, my Lord, who have just sworn in, good evening to everyone. Time was very short, so I could not prepare a note. I thought to run extempo, so my Lord, may kindly pardon me. In the case, my Lord, there are brief interruptions or pause, my Lord, since there's nothing I have prepared or I could prepare. But I can vouch for the bar that there is no controversy or dissatisfaction to have a court on a Saturday, at least today, my Lord, this Saturday. Everyone from the bar is very happy to welcome the newly sworn in judges. Many, many congratulations to all the newly appointed judges on their ascension. And I will not try to introduce introduce them to the glory and majesty of our august institution, because as much as they are a part of this institution, so am I, because we all knew each other. It's a very emotional and nostalgic moment. There are many of the honorable new judges who have been sworn in. We all grew up together, literally, in the profession. It seems like yesterday that we got introduced to each other in the court or in the chamber where we deviled in. So seems like just another day. And I congratulate all of you. Best wishes and good luck to all of you. Grateful to your lordships. May I now request the Secretary, Bar Library Club, to deliver his address? Treasurer. Treasurer, okay. My Lord,
the acting Chief Justice, my lords, the learned Additional Solicitor General, the learned Additional Advocate Generals, office bearers of the three wings of the bar, members of the bar, members of the registry, ladies and gentlemen. It is my great fortune and privilege to witness the oath of the 8 new judges of this honorable court: Justice Dutt, Justice Banerjee, Justice Dey, Justice Roy, Justice Deb, Justice Singh, Justice Ray Mukherjee, and Justice Medhora. I've known them in this side of the bar. Many of them are my contemporaries. They have been outstanding counsels, and I believe and know that they will make great judges. On behalf of the Bar Library Club, I welcome them all and congratulate them on this momentous occasion. May I now request the learned Secretary, Bar Association, to deliver his address. My Lord Honorable Acting Chief Justice, my ladyships, my lords, the learned Additional Solicitor General and learned Deputy Additional Solicitor General, Government of India, the learned Additional Advocate General, State of West Bengal, learned senior advocates, learned learned members of the bar, family members of the honorable judges, President and Secretary of the Bar Library Club and Incorporated Law Society, ladies and gentlemen. We all have assembled here to felicitate the newly appointed honorable judges, additional judge of the High Court at Calcutta. It is my great privilege to welcome the newly appointed honorable judges, which is value addition to this august institution. It represents victory, prosperity, and overcoming of all the evils. The honorable judges, who are 8 in number, are the atomic number of oxygen, essential for animals and human, and for fires to burn, which I mean to dispose of the pending cases in our High Court. My lords, if we have to mention about each one of you, it will take much time, but I should not leave anyone. Honorable Justice Arjok Datta, born to late Sunit Krishna Datta and late Sarvani Datta, passed from Calcutta University, Department of Law in 1999. Practiced in arbitration, company, civil suits, and tax. Justice Dutt was the senior standing counsel of Income Tax Department since 2022 and also senior counsel Group 1 for Union of India since 2022. His father was a renowned advocate and founder of CHN, a legal journal. His Lordship, the Honorable Justice Otto Banerjee, have passed Madhyamik from B Zone Boys Multipurpose School at Durgapur, higher secondary from Bidhan Chandra Institution, Durgapur, and graduated in law from Department of Law, Calcutta University, Hajra campus. Justice Banerjee is a very good cricketer who had represented India in the Advocates World Cup. And I am certain that from the next year, the Chief Justice 11 will be strengthened. His Lordship, the Honorable Justice Sandip Kumar De, born in a family of lawyers, graduated from University of Calcutta and had graduated in law from University of Delhi. Justice De joined the chamber of Sri Justice Ashok Kumar Dasodikari, senior advocate and a former judge of this honorable court. Justice De practiced in civil and writ matters, both in appellate and original side. His Lordship, the Honorable Justice Partho Pratim Roy, hails from Baharampur in the district of Murshidabad, West Bengal. Justice Roy completed his schooling from Jain Academy, Baharampur,
and thereafter perused his legal education from the University of Calcutta, Justice Roy comes from a family with a long-standing association with the legal profession. Son of late lamented Deepak Kumar Roy, advocate who practiced at the Berhampur District Court for nearly 50 years, and grandson of late Samapada Roy, advocate, carrying forward his family legacy. Justice Roy has adorned the chair of a honorable judge today. His Lordship, the Honorable Justice Sudeep Dev, enrolled as an advocate on May 2000. Chamber Junior of Sri Bimal Kumar Chatterjee, Senior Advocate and ex-Advocate General, State of West Bengal. Justice Dev was designated as a Senior Advocate in 2024. Comes from family of Sri Ramdulal De Sarkar, who was the pioneer of Indo-American trade, although Justice Dev did not profess as Benia. His Lordship, the Honorable Justice Anuj Singh, born on 11th of April 1978 at Calcutta, a first-generation lawyer, graduated from the Surendranath Law College, University of Calcutta, and enrolled as an advocate in the year 2002, began his profession in trial court. Justice Singh worked at Bangsal Court till 2007 under Sri Ashok Kumar Singh, advocate, and then moved to Calcutta High Court to practice in the original site. In 2007, Justice Singh joined the chamber of Mr. Sobhusachi Choudhury, senior advocate, and thereafter established a wide-ranging practice on the original and appellate side of this court. Honorable Justice Arjun Rai Mukherjee graduated in law from Calcutta University. His father was in Indian Police Service and mother was a homemaker. Justice Ray Mukherjee is an alumni of Rohada Ramakrishna Mission. Justice Rai Mukherjee joined the chamber of Mr. Justice Dipankar Datta, the Honorable Judge of the Supreme Court, and started practicing independently since 2006. Justice Rishad Medora is a first-generation lawyer. He did schooling from St. Xavier's College, Collegiate School, Calcutta. He graduated as a lawyer from the National Law School of India, University, Bangalore, and worked at a law firm, Amar Chand and Mangal Chand, Mumbai, for a little over 2 years. He then returned to Calcutta and joined the chamber of Justice Arijit Banerjee. His areas of practice were predominantly civil and commercial matters on both the original and appellate side. He has also acted as an arbitrator and mediator in service matter. My lords, whatever you did in your practice, that matters a lot. But your real innings starts now, when you are on the national canvas with these new responsibilities. Your every decision can change the fate of the litigants and nation and the future of new generation. We hope and believe that your lordship's stint as the honorable judges of this august institution would be cherished by one and all. We, the members of the Bar Association, pleased to render all possible assistance to your lordships for dispensation of justice. On behalf of the members of the Bar Association and for myself, I congratulate and welcome your lordships to adorn the chair of the judge of this honorable court. Thank you. May I now request the learned President, Incorporated Law Society, to deliver his address. My Lord, the Acting Chief Justice, my Lords on the dais, including the 8 honorable new judges who took oath today, the members of the registry, the Additional Solicitor General, the Advocate Generals, the office bearers and members of the 2 wings of the bar, family members of the newly appointed judges. My Lord, I extend a warm welcome to our newly appointed judges on behalf of the Incorporated Law Society.
The packed courtroom on a Saturday afternoon, early evening, shows how excited we are to have our new judges in this High Court. It is also my distinct privilege to welcome you to the bench, as I have the distinction of working with practically all of you in the profession. Your elevation also acknowledges and celebrate your respective legal career built on hard work, your deep knowledge of law, and sharp legal skills. Please remember, the role that you would now play is not merely a promotion or a career milestone. It is a profound transition. You are moving from the role of an advocate or a legal scholar to that of an impartial arbiter of justice, in that you have to ensure that every person who stands before you is heard, respected, and treated equally. I suggest that you lend your listening ear to the appearing advocates, especially the juniors who are future of this institution. Show a fierce dedication to equity and equal justice for all, and learn from your senior brothers who are your best guides. I once again welcome you all to the bench and wish you a long, fulfilling, and distinguished career in service jurisprudence. May I now request the Honorable Justice Aryak Datta to deliver his Lordship's address. To the Honorable Acting Chief Justice, my lords, the learned Additional Solicitor General, the learned Public Prosecutor, the learned Additional Advocate Generals, the office bearers of the three wings of the bar, members of the registry, learned members of the bar, and distinguished guests and family and friends. Today I stand before this august court, gratitude in my heart and a profound sense of humility and responsibility. To be called upon to serve as a judge of this historic institution is an honor beyond anything I could have imagined. When I first entered these hallowed corridors as a young advocate, without any brief or any client, but carrying little more than a hope and conviction for the majesty of law. At this solemn moment, I bow down in gratitude to the Almighty for His blessings and guidance throughout my journey. I owe an immeasurable debt to my parents who are not there anymore, whose sacrifice, value, and unconditional support shaped the foundation of my life. I thank my wife Rakhi and daughter Ankita for standing beside me through every challenge and every uncertainty that the profession brings. They have been my anchor. I also express my sincere gratitude to my seniors, colleagues, and members at the bar, for whom I have learned not only the discipline of advocacy, but also the ethics, dignity, and tradition of our noble profession. The bar and bench are equal partners in administration of justice. The strength of the judiciary lies not merely in the authority it exercises, but the confidence reposed in it by the people. That confidence can be sustained only through fairness, integrity, independence, patience, and firm reliability on the Constitution and the rule of law. I seek the blessings, guidance, and cooperation of my esteemed brothers and sisters judges, the learned members of the bar, my seniors and my juniors, and all officers and staff of this court in the discharge of my responsibility. I accept this great responsibility with humility in my heart and with a firm resolve to uphold the dignity of this institution
and the constitutional values it represents. Thank you. May I now request the Honorable Justice Othorup Banerjee to deliver his Lordship's address. To the Honorable Acting Chief Justice and the other Honorable Judges of the Honorable High Court, learned Additional Solicitor General, learned Additional Advocate Generals, and other members of the bar, honored guests, and dear family members, I stand before you today deeply humbled and profoundly honored to take the oath as a judge of this august and oldest High Court of our country. To be entrusted with the administration of justice is not merely a professional milestone, it is a sacred public trust. As I step onto this bench, I do so with full awareness of the grave responsibility this office carries. No one reaches a moment like this alone. Thanks to my predecessors and mentors for setting these high standards of integrity, erudition, and the fairness that I strive to emulate. Dear members of the bar, having spent years on your side of the courtroom, I know firsthand your dedication to advocate for truth. I look forward to working alongside a strong independent bar without which the wheel of justice cannot turn. My family's unconditional love, patience, and sacrifices have been my anchor. This moment belongs as much to each member of my family as it does to me. My commitment to the bench as I begin this chapter, I pledge that every litigant who enters this court, regardless of background, wealth, or status, will be heard with patience, respect, and complete objectivity. The Constitution and the law will remain my sole guiding light, applied with fear, favor, affection, or ill will. Since justice delayed is justice denied, I am committed to working diligently to reduce delays, simplify process, and ensure that justice remains accessible to all. The strength of our judiciary lies in the trust of the public. I promise to spend every day on this bench earning and preserving that trust. Thank you all for being here today and for your continued support as I begin this journey of the service to our country and the cause of the justice. Thank you. Jai Hind. May I now request the Honorable Justice Shondip Kumar De to deliver his Lordship's address. Mike. My Lord, the Honorable Acting Chief Justice, the Honorable Judges, the Additional Solicitor General, the Additional Advocate General, the Public Prosecutor, the Law Officers of the Central and State Government, the Presidents and Secretaries of three wings of the Bar, Senior Advocates, and learned members of the Bar, Officers of High Court Registry, ladies and gentlemen, members of the family of the Honorable Judges, both present physically and virtually. At the outset, I pray my obeisance from the bottom of my heart to Lord Krishna, Lord Jagannath, and seek their blessings. I pay my obeisance to my parents who are present here today, who have taught me to keep my head straight in any kind of adversity in life. I pay my obeisance to my mentor who made me a lawyer. I pay my obeisance to my senior who is also present today, a former judge of this honorable court, who really brought me up as a lawyer. I convey my sincere gratitude to my wife, son, brother, his wife, and my nephew for rendering their continuous support throughout.
I convey my sincere gratitude and wishes to the learned members of the entire bar for their support throughout my practicing career. Last but not the least, I extend my heartfelt gratitude to my friends who have really shaped my career right from academics to practicing career for their continuous support. I sincerely hope and trust that the love and affection bestowed on me from every corner would remain the same, and I would be getting the continuous support in performing my duties while stepping into a new chapter in my life. Jai Hind, Vande Mataram. May I now request the Honorable Justice Partho Pratib Roy to deliver his Lordship's address. Honorable Acting Chief Justice of this High Court at Calcutta, Honorable Judges of this court, Learned Additional Advocate General, and the Learned Additional Solicitor General, all learned advocates present here, my brothers and sisters, the history, and the staff of the court, members of my family, and other distinguished guests present here. At very outset, I seek the blessings of Almighty God, whose grace and guidance have brought me to this moment. I accept this responsibility with utmost humility and pray for the wisdom, courage, and strength to discharge my duties with fairness, integrity, and devotion to the Constitution. I wish to express my deepest gratitude to my senior, Sri Shaktiant Mukherjee, for his guidance, encouragement, and confidence in my throughout my professional journey. I am equally grateful to Honorable Justice Jyotibai Bhattacharya, former Chief Justice of this court, whose guidance, affection, and blessings have been a constant source of inspiration to me. I shall always remain deeply grateful to both of them. On this important occasion, I remember with profound gratitude my beloved father, Deepak Kumar Roy, who was an eminent advocate of Baharampur District Court. He was my first inspiration and taught me the values of integrity, dedication, and dignity of legal profession. Though he is not physically present today, I feel his presence and blessings, and I dedicate this moment to his memory. I am deeply thankful to my mother for her love, sacrifice, and prayers, which have been a constant source of strength throughout my life. I express my heartfelt gratitude to my wife, who stood by me throughout every up and down of this journey. Her patience, understanding, and support have been invaluable to me. I also thank my two daughters who loved and encouragement have always been a source of strength and happiness. I am grateful to all my seniors, colleagues, fellow members of the bar, friends, and well-wishers, from whom I have received guidance, affection, and support throughout my career. I also wish to place on record my sincere appreciation of my clerks and office staff, whose dedication and tireless assistance have played an important role in my professional journey. Today, as I take oath as a judge of this High Court, I am conscious this office is not merely an honor, but a solemn responsibility. I shall endeavor to uphold the Constitution, preserve the dignity of this great institution, and discharge my duties with complete integrity, and independence and humility. I thank each and every one of you for your presence, your blessings, and being a part of this very special moment in my life. Thank you. May I now request the Honorable Justice Sudeep Deb to deliver his Lordship's address. Honorable the Acting Chief Justice, Honorable Judges of this court, Learned Additional Solicitor General, Learned Additional Advocate General, office bearers of the three wings of the bar, members of the bar, friends and colleagues, and members of the registry. I express my sincere gratitude to all of you who have taken time to attend today's oath-taking ceremony on a non-working day. I thank the Learned Additional Solicitor General, Learned Additional Advocate General, the Secretary of the Bar Association, the Treasurer of the Bar Library Club,
and the President of the Incorporated Law Society for their kind words and warm wishes extended to me on behalf of the members of the bar. I must confess, when I first walked in the corridors of this Honorable Court in April 2000, I never imagined that one day I will be taking oath as a judge of this Honorable Court. My journey as an advocate began in 2000 when, through the kind recommendation of my uncle, a senior barrister, I had the privilege of joining the chamber of Mr. Bimal Kumar Chatterjee, barrister and senior advocate, and also former Advocate General of the state, as one of his chamber juniors. It was my senior who taught me, groomed me, and guided me how to place a case. As everybody knows, he's a hard taskmaster, and that helped me a lot in understanding the nature of the brief which I got in my initial days. After attending his chamber for a few years, one day he told me that now you should practice independently. My initial days in the profession were struggling, but gradually, with the passage of time, I settled down by the grace of God. During this period, I got the help of many seniors with whom I got an opportunity to work. I must also admit, in some of the matters where I was the lead counsel, I also got immense support from all my juniors. I'm equally grateful to my colleagues at the bar for their friendship, cooperation, and camaraderie over the years. While I cannot mention every name today, I remain deeply grateful to every one of them for their blessings, encouragement, and affection. I was designated as a senior advocate in the year 2024 by this Honorable Court. I hail from a family whose roots lies in the city for almost a tricentennial and known to most. I consider it a privilege to belong to such a family. Yet, beyond the legacy, what I have inherited are the people whose love and support have guided me throughout my life. My father, who was my greatest source of strength, passed away in August 2021, the day which I consider to be saddest in my life. Even today, I miss him a lot. My mother, who, because of her health issues, could not make it today, is a pillar of strength for me. In my initial days, when I used to come back from my senior's chamber very late at night, I always found her awake waiting for me, and she served food lovingly with her own hands. My wife has always stood beside me in every triumph and every trial. Her selfless sacrifices and unwavering belief in me have been the silent strength behind whatever little I achieved. This honor is as much hers as it is mine. My son, who is currently pursuing engineering at the Vellore Institute of Technology, and my daughter, who is a student of class 11, are the greatest blessings of my life. They have filled my life with immense pride and happiness. I must also mention that my sister has also been supportive throughout my journey. I am also thankful to all my chamber juniors and clerks who have painstakingly followed my instruction. Before parting, I would only say that I need all of your support, guidance, and assistance for delivering proper justice, for which I have taken oath today. Your blessings matter to me a lot. Thank you. Jai Hind. May I now request the Honorable Justice Anuj Singh to deliver his Lordship's address. Honorable the Acting Chief Justice, honorable judges present on the dais, and those who have joined virtually, the Additional Solicitor General of India, the Public Prosecutor, the Learned Additional Advocate General for the State of West Bengal, the Registry, the President and Secretaries of the Bar Library Club, the Bar Association, and the Incorporated Law Society, my dear colleagues who have been kind enough to come to court on a holiday, distinguished guests, and all those who have joined us virtually, good afternoon to you all, and thank you for your gracious presence today. I come before this august gathering with profound humility, gratitude, and a deep sense of responsibility. The oath administered to me today marks not merely the conferment of an office, but the acceptance
of a solemn constitutional trust. I am conscious that the office of a judge is not one of privilege. It is an obligation to uphold the Constitution of India. Having spent my professional life as a member of the bar, I remain deeply conscious of its traditions, its independence, and its indispensable contribution to this institution. I shall always value the assistance of the bar and endeavor to extend to every member, irrespective of age or standing, the patience, courtesy, and consideration that the office requires. On this occasion, I must briefly acknowledge those whose values and sacrifices have made this day possible for me. I remember with profound gratitude my late parents, who taught me honesty, discipline, compassion, and integrity through the example of their own lives. I remain deeply indebted to my elder brother, Mr. Ashok Kumar Singh, whose faith, mentorship, and guidance brought me into the legal profession. He continues to mentor me. My two other brothers, Shri Arun Kumar Singh and Mr. Anup Kumar Singh, who have been constant source of love and boundless love and inspiration to me. To my sisters, to my senior, Mr. Sabyasachi Chaudhary, for the guidance I received in chambers, to my wife Rupa, my daughters, my entire family, friends, colleagues, and juniors who supported me generously throughout my professional life. I accept this responsibility in the knowledge that their contribution to this journey has been far greater than any words of mine can adequately express. As I begin this new journey, I do so with humility, gratitude, and a sincere commitment to the values of this institution represents. I now undertake a far more difficult responsibility of listening with patience, deciding with fairness, and wherever necessary, interrupting only with great caution. Thank you, and Jai Hind. May I now request the Honorable Justice Arjun Ray Mukherjee to deliver his Lordship's address. Honorable the Acting Chief Justice, Honorable Judges, the learned Additional Solicitor General, the learned Additional Advocate Generals, members of the Bar, member of the Registry, ladies and gentlemen. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parama Brahma, Tashmai Sri Gurave Namo. Today, on this occasion, I will pay homage to my senior, all my teachers, all the judges of this honorable court, all the members of the bar with whom I have worked, and my parents. It is because of them, and it is because of the blessings of the Almighty that I am here today. 24 years ago, when for the first time, when I set foot in the corridors of this august institution, I didn't know anyone, and no one knew me either. But today I find that this is my family, and you are my family members. My father, since my childhood, said two mantras, Uttishtato Jagrato, Prapavara Nivodato. Arise, awake, and don't stop till the goal is achieved. And Shuptosho Shinghasho Mukhe na Provishanti Mriga. Deer doesn't enter mouth of a sleeping lion. Therefore, one must work hard. I always remember these words, and I will for the rest of my life. I thank my wife and two daughters for their constant support. I thank my clerk
He was the backbone of my chamber. I thank all my chambermates, my chamber juniors, and all my friends who always kept faith in me. And I also thank my father-in-law for his encouraging words. Lastly, my parents would have been very happy had they been here today. I'm sure they will embrace me the day we meet again. I wish all of you a very happy, healthy, and prosperous life ahead. May God bless you. Jai Hind. May I now request the Honorable Justice Rishad Medora to deliver his Lordship's address. To the Honorable Acting Chief Justice, the Honorable Judges, the learned Additional Solicitor General of India, the learned Additional Advocate Generals, the members of the Registry, the members of the Bar, and in particular, the office bearers of the three wings of the Bar, a very good evening to all of you. At the outset and at the foremost, I must confess that I'm very grateful today to be here addressing all of you. I spent about 23 years as a student in school, college, when I graduated. And the next 23 years of my life, I've been practicing as a lawyer. And it's been a fantastic learning experience all through. It's been exhilarating for me. And I hope that this next innings of my life will be equally exciting. Today, what I am is substantially because of this institution, what it has given me as a professional. And I'm grateful to all of you out here and others as well. I've always believed that the law is perhaps arguably the most intellectually stimulating profession that there can be. And I look forward to develop and further nurture this learning experience that I've had over the last many years. I look forward to all your support and your blessings in order to deliver justice. I have got a lot from this institution, and it is only natural that I have to give back a lot to this institution, which I hope to do so and which I promise to do. I have a lot of people to thank, a lot of people to be grateful to. Right at the very beginning, of course, my family members, my late grandparents, my mother, who's here, my aunts, my uncles, my mother-in-law, my wife, who has played a great role in me reaching today at this particular point of time, the support, the encouragement, and the sacrifices that she's made, I will be eternally grateful. I also have to thank, in terms of family members, not the last but not the least, my daughter, my 9-year-old daughter who's here. Her biggest concern was, when she got to know that I will be appointed as a judge, is whether she'll be able to, it was a disappointment that she won't be able to appear before me if she were to become a lawyer. I'm blessed to have her in my life. I have all my teachers to thank from school, from college, from whom I've learned a lot, who have given me a lot of time, patience, and a lot of love and affection as well. After school, after college, I worked with a law firm, as has been mentioned earlier, but my next biggest guru in my life was my chamber senior, to whom I owe a lot as well. It is because of his blessings, his nurturing me, his affection, that I'm also here today. I'm also grateful to all my friends from school, college, this profession, people who are here today, people who are perhaps watching this virtually, people who may be watching it virtually later. I'm grateful to all of them for all their support and their love. And I do hope that this support and love will continue and will stand me in good stead for the future as well as a judge and thereafter. I also have to thank my chambermates, my chamber colleagues, my chamber juniors, my clerk, and everybody else who has played a great role in my life in bringing me here today.
As I said, this profession has given me a lot, and I'm grateful to everybody. If I have missed out on naming somebody in particular, please do forgive me. I've been speaking from the heart, and if I haven't taken your name or acknowledged you out here today, it means that you're still there in my heart. I now look forward to serving the cause of justice, and I humbly pray and request all of you to bless me, to support me. It is quite possible that I will make mistakes in my journey ahead. Please forgive me, please bear with me. I will try my best. That is what I promise to each and every one of you. Thank you very much for being here. Jai Hind. Thank you. May I now request all present to rise for the national song, followed by the national anthem. Now national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे May I most humbly seek your lordship's leave to declare the proceedings as concluded. Yes. The proceedings are hereby concluded. नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज बात शतरंज की। जो देश में राजनीतिक शतरंज इस समय जिस तरह से खेल चल रहा है, उस खेल में राहुल गांधी वजीर के अंदाज में चौतरफा मार, जो राजा है इस समय, जो सत्ता का राजा नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम कुनबा चौतरफा मार कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने जो मोदी हैं उनके काबीना पर एक और निशाना साध दिया। उनके काबीना के और जो मंत्री हैं, E20 भी उन्होंने उठा लिया और E20 के एक सामने रखते हुए उन्होंने कह दिया है कि ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो कहीं हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे मोर्चों पर वैसे ही संकट गहराया हुआ है, नहीं जवाब दे पा रहे हैं, नहीं सूझ रहा है, तो अब ये एक और नया मोर्चा हम कह सकते हैं। वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी की इस मामले में सीधी एंट्री ये और इस सरकार को कहीं मुश्किलात में डाल रही है। क्योंकि बाकी जो चल रहा है, जैन जी है, आपने देखा कि कल मोहन भागवत आए थे सामने इस मसले मुद्दे पर मोदी और उनकी टीम को बचाने के, लेकिन वो प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ, किस तरह से बाद में प्रतिक्रिया आई, तो वो भी है। और साथ साथ आपने प्रयागराज भी देखी कि प्रयागराज में जो कल राहुल गांधी का प्रोग्राम होने वाला है, पहले परमिशन दी गई, फिर उसे निरस्त किया और अब फिर वो परमिशन हो गई। राहुल गांधी ने कहा है कि कल मैं प्रयागराज आ रहा हूं। जो सीन है, दृश्य है, ये सारी चीजें इसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर अभय दुबे साहब से हम रोज बात करते हैं। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत जी। अभय सर, आपने भी देखा होगा वो एक 53 सेकंड का वीडियो राहुल गांधी का कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। निशाने पर किस किस को माना जाए? नितिन गडकरी और हरदीप पुरी दोनों। वैसे तो सरकारी पूरी निशाने, प्रधानमंत्री निशाने पे अमित शाह आ नहीं पा रहे हैं। एक और ये नया सिलसिला, नया मोर्चा चल रहा था जो और उसमें कहीं कह सकते हैं आग में और घी डल गया है। सीधे राहुल गांधी अब इंटरवीन किया है। कैसे देखे, कैसे ले सर? देखिए, राहुल गांधी के निशाने पे तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है और नितिन गडकरी और हरदीप पुरी उसके हिस्से हैं। लेकिन मुझसे अगर जब कहा जाएगा तो मैं ये कहूंगा कि मैं नितिन गडकरी और हरदीप पुरी को एक कैटेगरी में नहीं रखूंगा। हरदीप पुरी की हस्ती जो है वो प्यादे की हस्ती है, उनकी कोई हस्ती नहीं है हरदीप पुरी की। इसलिए राहुल गांधी को तो ना निशाना बनाने तक की जरूरत नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी के पास एक हस्ती है। जब नरेंद्र मोदी को केवल क्षेत्रीय नेता माना जाता था, यानी गुजरात का नेता माना जाता था और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई पूंछ नहीं थी, उस समय नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब अमित शाह को तड़ीपार कर दिया गया था तो, और अमित शाह दिल्ली आकर कोशिश करते थे नितिन गडकरी से मिलने के लिए, तो नितिन गडकरी उन्हें 2.5 घंटा इंतजार कराया तब मिलने के लिए। सब लोग जवाब बात को जानते हैं। फिर अमित शाह अरुण जेटली के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि भाई हमें जरा फोन कर दो, हमें बुला लें अंदर जो है। फिर अरुण जेटली फोन करते थे, तब वो नितिन गडकरी उनको बुलाते थे अंदर। ये स्थिति थी। तो नितिन गडकरी ने वार भी किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। जो उनका हाईकोर्ट में मुकदमा है, इसमें E20 के सवाल पे वो बोले हैं कि
मेरा इस मसले से कोई संबंध नहीं है, ये तो कैबिनेट का फैसला है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो क्या वो उस कैबिनेट के सदस्य नहीं है? संयुक्त जिम्मेदारी का काम, संयुक्त जिम्मेदारी का जो रिवाज है उनकी वो लागू नहीं होता। वो कैबिनेट के किसी भी फैसले से हाथ नहीं खींच सकते। तो नितिन गडकरी ने बड़ी चालाकी के साथ, इतनी चालाकी के साथ भी नहीं, नरेंद्र मोदी और सरकार के ऊपर वार किया है, अपने आप को उनके कामों से अलग करने की कोशिश की है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं और काफी लोग इस बात को जानते हैं कि नितिन गडकरी का इस सरकार में रहना दरअसल नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा एक न एक तरह की चुनौती है। ये सब चुनौतियां बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से दी जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई आसानी से चुनौती दिए और निकल जाए, ये नहीं होता। देखिए अब आगे बात क्या होता, क्योंकि आप बताया ना, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि शतरंज की बाजी है ये। यस सर, यस सर। हाँ, शतरंज कई लोग खेल रहे हैं जी जी, और ये केवल दो खिलाड़ियों के बीच में होने वाली शतरंज नहीं है जी। ये इसमें एक ऐसी बाजी है, इसमें बहुमुखी कई खिलाड़ी एक साथ एक दूसरे के खिलाफ इसको खेल रहे हैं। जी जी। अब सर एक चीज और है, जैसे कल जो ये अभी जैन जी चल रहा है लगातार, 13 जैन जी, मेरे जैन जी, अब राहुल गांधी जी कल जा रहे हैं वो प्रयागराज, और पहले जो कुछ हुआ था आपने एक तो वो देखा था कि परमिशन दी गई, फिर निरस्त की गई, और अब फिर जब एक चौतरफा एक हमला शुरू हुआ तो दे दी गई। उसके साथ साथ कल मोहन भागवत जी, आरएसएस चीफ, वो आए थे सामने और उन्होंने कोशिश की कि कहीं जितना जो कुछ हुआ उसको वॉश आउट, जो जिस तरीके से कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लग रहा फिक्स है, सारा कुछ फिक्सिंग है, लेकिन बाद में जो चीजें निकल कर आई, जो प्रतिक्रियाएं हैं उन बच्चों की, जो आज का युवा है, तो ये क्या फ्लॉप, किस तरीके इसको कैसे ले सकते हैं, देख सकते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों की कोशिश यह है कि किसी तरीके से इस मामले को ठंडा कर दिया जाए। जब तक ये मामला गर्म रहेगा, लोगों के मन आंदोलित रहेंगे, उनके वोटरों का मन आंदोलित रहेगा, तब तक और बहुत दिन तक अगर ये सब चलता रहा, 6 महीने से ज्यादा अगर ये चल गया, तो बहुत बहुत लोग उस बीच में ये तय कर लेंगे कि इस बार नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये बात जो है, बहुत हो सकता है अभी भी ये लोगों ने बहुत ये तय कर लिया हो, लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है। वो चाहते हैं किसी तरह से ये वो किया जाए, इसको ठंडा किया जाए। इसीलिए तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बहला फुसला रहा है, कोई थोड़ा सा थपकी मार रहा है, कोई कुछ, मतलब ये इस तरह का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ये खेल बड़ा ही, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी सब मिलकर जो खेल रहे हैं, इसके पीछे ये भी एक रणनीति है, इसके पीछे भी एक सोच है कि हम ऐसा करेंगे तो उसका इस तरह का राजनीतिक परिणाम निकल सकता है, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो राजनीतिक परिणाम निकल सकता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, खतरनाक होगा। जी जी। अब ऐसा ये रहा कि कल हमने पूरा उनका जो मोहन भागवत जी का कह लीजिए प्रवचन, उवाच, जो प्रश्नोत्तरी चली, और उसमें आपने वो देखा होगा कि कई चीज़ें की शिक्षा की जो जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, सबकी जिम्मेदारी एक चीज़ आई। फिर उसके बाद उन्होंने वो आरक्षण का भी विषय टच किया, बाकी भी चीज़ें हुई, बेरोजगारी पे भी हुई। एक चीज़ बड़ी मुझे लगी जिस पे मैं सोचता हूँ आप जरूर उस पर बताइए, उसको कैसे हम डिकोड किया जा सकता है। वो जो पान की दुकान का उन्होंने उदाहरण दिया, ये क्या, ये मोदी जी कहते हैं पकोड़ा तले, देश के जो युवा हैं इधर ये कह रहे हैं कि पान की दुकान का। उन्होंने बताया कि सब एक वो बच्चा था, उसने पान की दुकान लगी, 29 लाख रुपए कमा ली, और उसमें श्रमिकों की कहीं साधना और श्रम को कहीं तरजीह देने की बात हुई, इधर आपके लोग मार रहे हैं सबको। तो ये सब उल्टा नहीं पड़ रहा है, जितने नाव खेल रहे हैं सब उल्टे पड़ रहे हैं शायद। देखिए, जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि पान की दुकान को के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्रीधारी नौजवान हैं, जो पढ़ते लिखते समय उनके पास अपना किस तरह का जीवन उन्हें गुजारना है, क्या वो अपनी कल्पनाओं में अपने आप को सड़क के किनारे पकौड़ा तलते हुए देख रहे थे जिस वक्त वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कॉमर्स और अंग्रेजी, हिंदी पढ़ रहे थे? या वो अपने आप को पान की दुकान, पान लगाते हुए देख रहे थे? न पकौड़ा तलना गलत बात है, कमतर बात है, न पान लगाना कमतर बात है। सवाल ये है कि जैसे मैं पत्रकार बनना चाहता था, मैं एक बुद्धिजीवी बनना चाहता था, अगर मैं अभी पकौड़ा तल रहा होता या पान की दुकान लगा रहा होता
या बिसात खाने की दुकान चला रहा होता, या हमने एक छोटा सा होटल खोल लिया होता, या ठेलिया लगा रहा हो, तब भी मैं रोजी रोटी कमा रहा होता। लेकिन तब मेरे मन में गहरा संतोष होता कि मैं क्या सोच के चला था और कहां पहुंच गया। देखिए, ये बात बहुत सारा बेरोजगार समाज हमारे सामने खड़ा हुआ है। उनसे ये कहना कि अब आपको ये सब रोजगार तो नहीं मिल सकते, अब आप ऐसा कीजिए कि प्लम्बर बन जाइए, अब आप ऐसा कीजिए कि इलेक्ट्रीशियन बन जाइए, अब आप ऐसा कीजिए कि बढ़ई बन जाइए, आप ऐसा कीजिए कि लोहार बन जाइए। प्लम्बर बनना कोई कमतर बात नहीं है, बढ़ई बनना कमतर बात नहीं है, इलेक्ट्रीशियन बनना कमतर बात नहीं है। सवाल यह है कि वो लोग जिनसे आप ये कह रहे हैं वो क्या बनना चाहते हैं, और आपको उन्होंने वोट, आपको समर्थन किस अपेक्षा में दिया था? इस अपेक्षा में दिया था कि हम एक ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जो हमसे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन बनाने की तरफ हमें धकेलेगी। तो रोजगार का प्रश्न बड़ा पेचीदा प्रश्न है। केवल ये कह देना कि भाई निजी उद्यमशीलता, यही तो कह रहे थे मोहन भागवत, निजी उद्यमिता और स्वरोजगार वगैरह ये महत्वपूर्ण है, केवल नौकरी ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? सब लोग जानते हैं कि हर स्वरोजगार हमेशा महत्वपूर्ण होता है। भारत में करोड़ों लोग स्वरोजगार करते हैं, वो कोई कमतर भारतीय नागरिक थोड़ी ना है। लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग रेडी पटरी बनने के लक्ष्य को वेधने के लिए वो अपना जिंदगी की शुरुआत उन्होंने नहीं की थी। वो एक खास तरह की जिंदगी बिताना चाहते थे, और वो जिंदगी उन्हें नौकरी से ही संभव हो सकती है। वो नौकरी चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे निजी क्षेत्र की नौकरी हो, चाहे संगठित क्षेत्र की नौकरी हो, चाहे असंगठित क्षेत्र की नौकरी हो, वहीं से उन्हें मिल सकती थी। इसलिए अगर आप उनसे इस तरह की बातें करेंगे कि आप पान की दुकान खोल लीजिए, आप पकौड़ा तलने का वो ठेला लगा लीजिए, तो समझ लीजिए कि आप जेन जी का जो आंदोलित मन है, उस आंदोलित मन को शांत करने की बजाय आप उसको और ज्यादा अशांत कर रहे हैं। वो और भी प्रखर रूप से आंदोलित होगा, और जब मन आंदोलित होता है तो सड़कें भी आंदोलित होती हैं। अच्छा, उन्होंने एक नेता और नेतृत्व वो सब भी इसको डिस्क्राइब किया था। वो सवाल तो सीधे सीधे ये था, जो आज की परिस्थितियों में कि जो मोदी को लेकर कहीं वो प्रश्न था और उनकी जो चीजें आई, तो वो उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? जो बातें उन्होंने कही सब वही है कि वो एक, देखिए, इस तरह की चालबाजी में हमेशा एक ये भी दांव होता है कि हम अपने आप को थोड़ा निष्पक्ष दिखाएं, और हम ये दिखाते हुए लगे कि हम कोई सत्ता के अंग नहीं है, हम सत्ता से बाहर खड़े हुए हैं, और हम सत्ता को भी नसीहत दे सकते हैं, हम मोदी जी को भी नसीहत दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने की मशीनरी कहा जाता है, हम इससे भी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक उनकी बात को कोई लेगा कैसे? तो जो पूरा मकसद था, तो आयोजन का जो मकसद तो उसके पीछे मैं कहना ये चाहता था, देखिए, तो ये उन्होंने पहले भी तिकड़म इन्होंने की थी, मोहन भागवत ने, फिर ये तिकड़म इस प्रकार की कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत गलत है, और इस बात को सब लोग समझते हैं। गलत बात इसमें यह है कि भारत में शिक्षा की जो खराब व्यवस्था है, उसका अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बड़ा जिम्मेदार है तो वो मोहन भागवत है। इसलिए जिम्मेदार है कि पूरा शिक्षा का मंत्रालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है। अब शिक्षा में सुधार होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं शिक्षा में सुधार होना चाहिए, तो शिक्षा व्यवसाय का जरिया ना हो। भाई, शिक्षा व्यवसाय का जरिया ना हो तो जब पूरी शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो वो तो आपके नेतृत्व में हो रहा है, आप ही उसे करवा रहे हैं। लेकिन यहां पर आप इस तरह से उपदेश दे रहे हैं जैसे आपका इन सब जो चल रहा है उससे कोई वास्ता नहीं। और ये मानना कि लोग हमारी इस चाल को समझ नहीं पा रहे हैं, ये काफी बड़ी मूर्खता है। इसका मतलब है वो काफी अपने आप को मुगालते में रखते हैं मोहन भागवत जी। सब लोग समझ रहे हैं कि क्या बात है क्या नहीं। बिल्कुल सर, कल जो प्रयागराज वाला है इसमें देखिए वो सशर्त कुछ है, और इसके पहले भी हुआ है। जो आप जो है जाइए, कोटा में देखा था आपने, हमने देहरादून देखा,
इन राजस्थान हुआ, फिर उत्तराखंड हुआ, अब ये जो उत्तर प्रदेश में जो कोशिश हुई प्रयागराज के आयोजन को अब दी गई है। हम मान के चलें जैसे पिछले जब जो हरकतें करते रहे, कुछ उस तरह की हरकतों की संभावनाएं भी हम कहीं देख सकते हैं। कल है, अब कुछ घंटे शेष हैं, जब हमारा प्रोग्राम होगा तब कुछ ही घंटे तब भी बचेंगे। देखिए, शरारत करने से तो ये सिस्टम, ये सरकार बाज नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस ने ये दिखाया है कि भाई अगर आप कांग्रेस इस कार्यक्रम में बाधा डालेंगे तो दरअसल आप जेन जी को चुनौती देंगे। जेन जी को आप चुनौती देंगे तो हो सकता है कि जेन जी नाराज हो जाए आपसे। बताइए, जब जिस जगह पे उन जो इजाजत थी वो वापस ले ली गई, अगर वो इजाजत इसी तरीके से दोबारा ना दी जाती और फिर भी राहुल गांधी किसी और जगह कार्यक्रम कर लेते, तो वो लोग जिन्होंने इजाजत वापस ली है वो तो फंस जाते। जी जी, वो तो विपक्ष की आंख की किरकिरी बन जाते। तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया एक तरह से देखा जाए जेन जी के निशाने पे आने से। जी सर, ये जो प्रधानमंत्री जी की एक रील आई थी, आपने देखा होगा कई दिन बाद, वो अलग तरह की बड़ा रहा ना कि अब हैंडलूम पे रील जारी कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता क्या है? देखिए, पूरा तरीका यही है कि सब कुछ ठीक ठाक है और हम लोग विकास की बातें कर रहे हैं और ठंडा किया जाए, इसलिए पोस्टर लगाए गए कि वो हम जेन जी के प्राउड माँ बाप हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, वो भटकी हुई राह पे नहीं चल सकते, वो गुमराह होने के लिए तैयार नहीं है। एक पोस्टर ये भी है, इसमें जेन जी भी है और नरेंद्र मोदी भी हैं, दोनों एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाए खड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि लोग जनता दोनों से प्रेम करती है। अब इस तरह से पोस्टर लगाने से अगर लोगों की राय बदल जाती हो, मेरे ख्याल से ये सब जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसके पीछे एक डर ये है कि कहीं इनकी अपनी भक्त मंडली ही इनके खिलाफ ना हो जाए कहीं। तो ये सब बातें भक्त मंडली को संतुष्ट करने के लिए भी की जा रही हैं। अब तो एक चीज और भी हुई है, वो जो एक तो सीजेपी जो है वो क्या बोलती पब्लिक, वो भी अब सितंबर से उतरने जा रहा है। एक चीज, और दूसरा इसी जैन जी से जुड़ा, वो आपने कंगना रनौत का वो सुना था, वो गटर जैन जी, वो भी अब कहीं पूरा उलट गया। उनका भी एक लंबा चौड़ा आया है वो कि ऐसा था, ये था, सफाई आई, और साथ में कई बीजेपी के सांसद। अब ये भी कहीं बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि एक तरफ आरएसएस के जो वो नंबर 3 तो क्या क्या बोल रहे थे, अतुल्यमय जी लमय। तो अब ये क्या, ये इस तरह की जो ये विरोधाभास, कहीं अलग अलग जो चीजें हैं, दो तरह की बातें, ये क्या कहती हैं? देखिए, अभी तक भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरे मसले से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कोई बहुत ही सिक्काबंद और मजबूत रणनीति नहीं बना पाई है। अब कुछ कुछ उनकी रणनीति उभर रही है। तो जब तक रणनीति नहीं थी तब तक जो मन में आ रहा था बोल रहा था। अतुल्यमय ने कुछ और बोला, कंगना रनावत ने कुछ और बोला, नरेंद्र मोदी कुछ और बोल रहे थे, हैं? ये आपके जो दिल्ली के एक नेता हैं, वो कुछ और बोल रहे थे, गुर्जर समाज के नेता हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बोल रहे थे। जो जितना बड़ा 30 मार का बनना चाहता था वो बन के दिखा रहा था उनका। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इन सबके बोलने में एक तरह का अकेलापन था। सारी बीजेपी जो एक स्वर में बोलती थी, एक तार में पूरे संगीत की तरह बजती थी, सारी बीजेपी जो है उस तरह नहीं बज रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो रीलें निकाली और उसके बाद मोहन भागवत जो बोले हैं, अब उसके बाद में जेन जी के खिलाफ जो कड़वी बातें की जा रही थी वो थोड़ी कम होंगी और कोशिश ये की जाएगी कि मामले को ठंडा किया जाए किसी तरीके से, लोगों का गुस्सा और बेचैनी जो है उसकी ऊपर थोड़ा पानी फेंका जाए। तो मोहन भागवत की पूरी कोशिश उसके ऊपर पानी फेंकने की कोशिश है। जी, अब सर संसद जो है हम देख रहे हैं दूसरा सप्ताह भी उसी हंगामे, उसी शोर शराबे में सब में डूब गया, चला गया। और चाहे वो बीता सप्ताह हो और चाहे ये सप्ताह हो, वो केवल उनका अपना जो बिजनेस था उस समय थोड़ा सा हो गया था, बाकी कुछ भी नहीं हो पाया। और आज एक मैं आपने देखा होगा कि बड़ा जो शोर शराबे के बीच किरण रिजिजू की एक बयान सुन के हंसी भी आ रही थी और लग रहा था कि किस तरह की बातें ये सरकार की ओर से बनी। वो कह रहे थे कि अमित शाह कितने ब्रेव हैं, उन्होंने उनसे
आतंकवादी कांपते हैं, नक्सली कांपते हैं, और जिस दिन वो सदन में आएंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे। अरे भाई वो मुहूर्त क्या है? मुहूर्त आपको आसंदी बार बार कह रही है कि आइए दे दीजिए बयान, विपक्ष भी यही चाहता है, कब आएंगे, क्या होगा, ये इस तरह की ये भी नहीं, अजीबोगरीब ये जो किरण रिजिजू, देखिए इसमें कुछ भाजपा जब अ, अनिश्चित थी अपनी रणनीति के प्रति, तो जब अनिश्चितता होती है, जब आप एक दूसरे को काटती हुई एक दूसरे की विपरीत बातें बोलते हैं, तो उससे आपके भीतर की जो दरारें हैं वो भी दिखाई देने लगती हैं। आपको ध्यान होगा कि जो पिछले उपराष्ट्रपति थे, राधाकृष्णन से पहले जो उपराष्ट्रपति हुए थे, धनखड़, क्या धनखड़ कभी ये कह सकते थे कि विपक्ष की इस मांग की जो भावना है वो नेता तक पहुंचा दी जाए? नहीं कह सकते। लेकिन इन्होंने कहा, जी हाँ, इन्होंने कहा। ये भी तो पहली बार हो रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है। अमित शाह इतने दिनों से नहीं सदन में आए, इतना उन्हें घसीटा जा रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है। नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे, सदन से बाहर रात में रीलें बनाते हैं, ये भी पहली बार हो रहा है। जी, अब 4 ही दिन का सत्र बचा है, 10, 11, 12, 13, ये इसको देखें तो क्या संभावना है हम देखें कि अब ये जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से रिजिजू ने कहा कि जिस दिन वो सदन में आएंगे, और वो ये भी कहते हैं कि आसंदी तो निर्देश करे, आसंदी तो कहे, उसमें तो आए, बिल्कुल देंगे, और आप भागते फिरेंगे, आप नहीं रुक पाएंगे, आप नहीं सुन पाएंगे, तो हम कुछ माने कि जो अगला सप्ताह उसमें कुछ संभावनाएं दिख, क्योंकि व्हिप भी जारी हुआ है। पहले तो सब लोगों को ये बताना चाहिए कि जो इतना पराक्रमी गृह मंत्री है, नहीं, कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया कि अगले सप्ताह सांसद रहे 3-4 दिन, ये भी हो गया, ये भी निकल के आया। जी हाँ, जो इतना पराक्रमी और हाहाकारी किस्म का जो गृह मंत्री बताया जा रहा है, जिसको सुनकर आतंकवादी थर-थर कांप जाते हैं, वो अभी तक है कहाँ? मतलब जो है, ये तो भी बताया जाए। वो और बाकी सारे काम कर रहा है, जी, लोगों से मिलजुल भी रहा है, मंगल मिलन भी कर रहा है अपना, लेकिन सदन में नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे उसकी भी तो कोई रणनीति है। जिस रौद्र रूप की धमकी दे रहे हैं किरण रिजिजू, वो रौद्र रूप जो है वो अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया? तो ये सब बातें करने से काम चलता नहीं है संजीव जी। सर अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट वो था कि एक स्पेशल सेशन, वो जो परिसीमन बिल को लेकर था, तो अब ये भी कहीं निकल कर आया कि नंबर गेम नहीं वो जुट पा रहा है। आप देख रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं कि अभी वो आज जो ये दीगर जो दलों से बुलाए गए सांसद जो हुआ है सारा कुछ पीछे, उनसे बैठक बात और ब्रेवली बोले, सब करें। तो इसमें एक ये, और दूसरा जो है वो विदेशी जो फंडिंग से जुड़ा बिल है, उसको लेकर हमने देखा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आज प्रकट हुए, तो उन्होंने कई चीजें कही, और कहीं जो अमेरिका और तमाम अब वो ईसाई वाला एंगल है जो वो, तो कहीं ये भी चीजें सता रही हैं, और इसको पास कराने को लेकर भी कुछ जद्दोजहद कुछ चल रही है, किस तरीके से ये क्या देखेंगे दोनों चीजें? अब बीजेपी कोई भी बिल, कोई भी कानून जो है वो आसानी से सहज तरीके से नहीं पास करा पाएगी। हर चीज में पंगा होगा, हर चीज में दिक्कतें होंगी। बीजेपी की राह अब आसान नहीं है, चाहे वो विदेशी मुद्रा कंट्रीब्यूशन वाला बिल पास कराना चाहे, चाहे परसीमन वाला तो तकरीबन काफी नामुमकिन सही है पास कराना, क्योंकि द्रमुक ने समर्थन देने के बदले में बहुत कड़ी शर्तें रखी हैं। आज हिंदू ने उनके बारे में विस्तार से प्रकाशित किया है, क्योंकि अमित शाह ने जब ये कहा था कि हम आपकी सीटें डबल कर देंगे, मतलब जो है दूनी कर देंगे, तो ये मौखिक आश्वासन था जी, जो आज तक मौखिक बना हुआ है सर। इसे लिख के नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि वो अमित शाह ने मौखिक कह दिया और वो लोग बड़े उत्सुकता पूर्वक बीजेपी के झाड़ पे चढ़ जाएं, ये नहीं हो सकता। जी जी। अब सर जो अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बार बार पूछता हूँ, गुजरात और तमाम जो राज्यों में चुनाव है, पंजाब भी है, गोवा भी है, पंजाब को लेकर आज बड़ी अच्छी एक राहुल गांधी जी की तरफ से एक वो आया, वो जो उन्होंने अपना एक ट्विटर पे और उस पर एक अनुमति दी है कि मुझसे सवाल पूछ सकते। तो उन्होंने पूछा आपका बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन है? उन्होंने कहा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अंकल। ये सर ये जो राहुल जी की राजनीति की परिपक्वता, ये क्या क्या है, क्या इसको कैसे हम लोग डिकोड कर सकते हो? तो अब उन्हें पंजाब का चुनाव लड़ना है, होशियारी, वो भी होशियारी कर रहे हैं। देखिए, अमरिंदर सिंह को व्यवहारिक से देखा जाए तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नापसंद करते थे,
उनकी इसी नापसंदगी के कारण प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को उनके खिलाफ आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि सिद्धू ने अमरिंदर सिंह का अपमान कर दिया। अमरिंदर सिंह छोड़ के जो कभी बीजेपी में नहीं जा सकते थे, बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस को अमरिंदर सिंह के नेतृत्व की नहीं, लेकिन अमरिंदर सिंह की सद्भावनाओं की आवश्यकता तो है ही। अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि याद उन्हें कांग्रेस की आती है। क्लेवर मूव है, क्लेवर मूव है। हाँ, क्लेवर मूव, वही सही कह रहे हैं आप। अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि याद उन्हें कांग्रेस की आती है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं भाई सबसे ज्यादा कोई नेता पसंद है तो अमरिंदर सिंह पसंद है। अबे तरीके जो झारखंड से आपने एक खबर देखी होगी, वो नेहा वोहरा पे उन पे वो जो है स्याही फेंका जाना, ये सब चीजें, ये क्या, ये भी जो उस आंदोलन को लेकर सब चल रहा है झारखंड वाला, वहां ये होना। स्याही अभिजीत दीप के भी पर फेंकी गई थी। स्याही एक जमाने में अरविंद केजरीवाल भी फेंकी गई थी, तो इससे इन नेताओं की शख्सियत और बढ़ गई, कम नहीं हुई। जी। अब किसी की स्याही फेंक दी, किसी के मुंह पे आपने कालिक पोत दी, या किसी के साथ बदतमीजी दे दी, अपमान कर दिया, या आपने कुछ खिलाफ ट्रोलिंग कर दी, इन सब चीजों से किसी के राजनीतिक कैरियर को आप डाउन नहीं कर सकते। जो नेहा वोरा का राजनीतिक कैरियर है इस वक्त स्टार बनी हुई है वो सारे देश में। लोग उसको सुनना चाहते हैं, बोलती भी अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अब इधर ये अंतिम सवाल करूंगा, जो राहुल गांधी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, देखिए ये जो E20 पेट्रोल वाला मसले को जिस तरीके से उन्होंने फिर टेक ओवर किया और उस पर आक्रामकता दिखाई, वो कि वहीं जहां मैंने शुरू किया था दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है, और राहुल गांधी कहते हैं कि H फाइल ही फाइल। और देखिए 2029 तक अभी इनके पास मौका है, नरेंद्र मोदी के पास। उसके पहले तो कोई बात अनहोनी दिखती नहीं, लेकिन ये जो एक एक करके निशाने पर लिया जाना, एक एक करके हैं तो सीधे निशाने पे मोदी, लेकिन बाकी जो उनके अभी अमित शाह थे और बाकी दूसरे आ रहे हैं, तो ये H फाइलों का भी सिलसिला लगातार बहुत तेज गति से होगा, और संसद के खत्म होने के शायद और ज्यादा सड़क पे ज्यादा गति दिखाई देगी। यहाँ लाके समाप्त करूंगा आपका अंतिम। देखिए इस अधिवेशन में तो ये कुछ करा नहीं पाएंगे, करा ही नहीं पाए, घबराए रहे, बचाव करते रहे अपना। अब विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, उसके बारे में माना जा रहा है कि परिसीमन कराया जाएगा, लेकिन परिसीमन का बिल भी तब लाएंगे उसके अंदर जब इन्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि वो परिसीमन पास करा पाएंगे। अगर विश्वास नहीं हुआ, पहली बात तो अमित शाह सरकार की तरफ से लिखित रूप से, डीएमके ने कहा है कि लिखित रूप से दो कि भाई 71 जो जनगणना है वो 71 में फ्रीज कर दी जाएगी, उनका एक कहना ये है। दूसरा ये है कि सबकी दूनी हो जाएंगी, ये लिख के दो। तो वो अभी तक सरकार को ही तय करना पड़ेगा, ये सब चीजें लिख के देगी। क्या सरकार अपनी पॉलिसी को लिखित रूप से बदल देगी? कुल मिला के मुश्किलें कम होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बिल्कुल दिखता नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आप सुन रहे थे दोस्तों प्रोफेसर अभय दुबे साहब को, और जो अभी नई कुछ बातें हैं, कुछ मूव्स हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, इंडिया ब्लॉक हो, और जो वो वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जितना अभी माहौल बना हुआ है, इस माहौल से कैसे उभरा जाए, उभर नहीं पा रहे हैं। जो कोशिश हो रही है, त्यों फंसने का क्रम ज़्यादा बढ़ रहा है, गहरा हो रहा है। और हर दांव, जो हम बार बार कहते हैं कि जितना दांव खेल रहे हैं, हर दांव उल्टा ही पड़ा है। जो हमने शतरंज की बाजी से शुरू किया था कि अभी जो वजीर है, वजीर के निशाने पर राजा भी है, और राजा के साथ में बाकी प्यादे और मोहरे सब हैं, और एक के बाद एक इसमें का H फाइल, बहुत सारी H फाइल्स हैं। और अभी जब मैंने ये भी जिक्र किया कि संसद का सत्र ये जो हुआ है मौजूदा खत्म होने के बाद, और अभय सर कह रहे हैं कि जो विशेष सत्र है बुला पाएंगे नहीं बुला पाएंगे, जो नंबर है, गेम है, बहुत सारे मुश्किलात हैं। तो बड़ा रोचक होने वाला है जो आने वाला वक्त है, और चुनाव भी बहुत सारे सूबों में है, तो बहुत एक अलग जो मुश्किलों का दौर है इस समय, बहुत गहरी मुश्किलों का। तो बहुत मज़ा आने वाला है सारा कुछ, जो देश की सियासत है, जो हुक्मरान है, कठिनाइयाँ हैं। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट पर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सिडनी में हूं, रात के 3 बज रहे हैं और मैंने अभी केपी मलिक साहब के साथ शो किया अपना। कुछ जरूरी मुद्दे थे, मुझे बात करनी थी, तो मेरे को यही समय मिला, तो मैंने उनके साथ शो किया और मैंने उनसे कुछ बड़ी बातें पूछी। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं, बढ़िया राजनीति की समझ रखते हैं। मैंने उनसे पूछा, मोदी और शाह को जैन जी से, राहुल गांधी से डर लगता है? ये तो मुझे समझ में आ गया। इस्तीफा प्रधान का नहीं हुआ, इस्तीफा मोदी जी के घमंड का हुआ, मोदी जी के अहंकार का हुआ, अमित शाह की नीति का हुआ। ये तो समझ में आता है कि उनको लग गया कि राहुल गांधी के जो तेवर हैं, दो दो बार के रज्जू हाथ जोड़ने गए, वो नहीं माने राहुल गांधी कि हाउस में तो आना पड़ेगा अमित शाह को। अमित शाह की सुना है अध्यक्ष जी से, लोकसभा अध्यक्ष से बात हुई है और उनको समझ में आ गया बिना हाउस में आए काम चलेगा नहीं। लेकिन 15 दिन से गायब है, गजब हो गया है। इन नौजवानों को तो राहुल गांधी को सलाम की इन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया, ऐसी चीजें खड़ी कर दी कि सरकार उल्टा सिर के बल खड़ी हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी शाह को तो डर लगे, भागवत को डर क्यों लगने लगा? भागवत को डर इसलिए लगने लगा कि इन नौजवानों ने, दलित के मंच पे ब्राह्मणों ने कहा कि मनुवाद सबसे खराब ग्रंथ है। मनुवाद से ज्यादा घिनौना ग्रंथ कोई नहीं है, जो जातियों में बांटने की बात करता है, शूद्र दलितों को, एक वर्ण व्यवस्था को बढ़ाने की बात करता है, उनके लिए अपमानजनक बात करता है। मैं भी मानता हूँ, मेरी निगाह में भी दुनिया का सबसे खराब अगर कोई ग्रंथ है, मैं तो ग्रंथ भी नहीं मानता, वो मनुस्मृति है। जो व्यक्ति, जो ग्रंथ, जो समाज, जो अध्यात्म, जो बाबा किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करे, समुदाय विशेष पर टिप्पणी करे, तो मेरे लिए वो दो कौड़ी का है। मोहन भागवत को डर क्यों लगा और अमित शाह क्यों कांपे? बढ़िया बातचीत की है मैंने, रात के 3 बजे बातचीत की है, तो आप भी जरा दिल लगा के सुन लीजिए इस बातचीत को केपी मलिक से, और मेरी एक बात और मान लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मानी। बड़े मन से आजकल सिडनी में घूम रहा हूँ और ब्लॉग बनाता हूँ दिन भर सिडनी में। मैंने क्या किया, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल खोलिए, उसके ऊपर डालिए जस संजय, और मेरा वहाँ पे ब्लॉग खोलिए। फैमिली के साथ आया हुआ हूँ, बच्चों के साथ मस्ती कर रहा हूँ, तो जरा देखिए, एक इंसान यहाँ रह के भी मैं घूम भी रहा हूँ और भारत की राजनीति पर कैसे कैसी निगाह रखे हुए हूँ, मेरी पूरी टीम निगाह रखी हुई है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। लेकिन मस्ती की पाठशाला भी जस्ट संजय पे है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। अगर संभव हो तो मेल आईडी भी डाल दीजिए, मैं मेल आईडी से आपके संपर्क करने की कोशिश करूँगा, आपसे संवाद करूँगा। सिडनी के बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज कर रहे हैं, मैं सोमवार को उन सबसे मुलाकात जल्दी करूँगा। चलते हैं दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के साथ पास में इस चर्चा के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। रात के 2:45 बज रहे हैं सिडनी में, ठंड है, 2 डिग्री का तापमान, लेकिन 3 दिनों से आपका समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज सुष्मिता से कहा कि आज चाहे पूरी रात हो जाए, दर्शक कह रहे हैं कि केपी मलिक जी कहाँ चले गए, तो मैं इंतजार करूंगा। मेरे एक मित्र हैं मिस्टर रंजीत, लखनऊ में मेरे दोस्त थे, पिछले 13 सालों से वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने डिनर पे बुलाया, मैं लौट के आया और 2:45 बजे मैं आपका ये शो कर रहा हूँ। देख लीजिए आप मुझे कितना परेशान करते हैं कि मैं 3 बजे भी आपको परेशान करने के लिए जगा हुआ हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और इसमें हमें कुछ जो है मामला गड़बड़ लग रहा है कि आप जो है चाणक्य के साथ मिल गए हैं, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि यहाँ कुछ दिक्कत होगी तो लोग निकल लेंगे, आप पहले ही जाके अपना मामला आपने सिडनी में जमा लिया है। पिटाई उटाई होगी तो जो लोग यहाँ रहेंगे देश में उनकी होगी, तो हम सही तो भाई बात है, सही खतरों के बात है। खिलाड़ी हैं। देखिए अरे आप बड़ा जिस अच्छा लग रहा प्रकार है, से बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं आया, मैंने ऊबर टैक्सी करी, टैक्सी में बैठा तो उसने, ड्राइवर ने मेरा चेहरा पलट के देखा, बोले कि मेरे, आप संजय हैं ना? मैंने चौंका। तो वो 4 PM को देखता था, मैं सोचा सिडनी में टैक्सी ड्राइवर अगर आपको ये कह रहा हो, तो मैं चौंका। फिर मैंने उससे पूछा, वीडियो बनाया कि यार तुम कैसे जानते हो? बड़ा अच्छा लगता है भाई, कई सारे लोग मिल रहे हैं यहाँ सिडनी में जो चैनल को अरे जानते हैं, आपको जानते हैं। संजय जी हमारे 31 साल पुराने दोस्त मिले और वो मुंबई में है आपके, और बड़े बड़े मतलब कलाकार हैं, वो बड़े कलाकार हैं। गजराज, अगर आपने नाम सुना हो, हाँ हाँ, गजराज राव। मेरी बात हुई थी गजराज गजराज राव जी जो है, गजराव राव जी 95 में, आप सोचिए जब टीवी 18 की स्थापना हुई थी,
तब हम लोग तो ज्यादातर करंट अफेयर और न्यूज में करते थे, और वो एंटरटेनमेंट के जो इनके यहाँ प्रोग्राम होते थे उसमें आते थे वो। तो हमारी उस दौरान मीटिंग बातचीत होती थी, भागम भाग में रहते थे। तो उन्होंने मेरे को फॉलो किया मेरे ट्विटर पे और मैसेज डाला स्पेशली, और कहा भाई मैं तो आपको 4 PM पे देखता हूँ और आपका ये हूँ। फिर मैंने कहा आपको 95 याद है? बोला यार वो तो मुझे ध्यान नहीं है। मैं कहा आप तो मुझे अभी 4 PM से देख के याद कर रहे हैं, मैं तो 95 से जानता हूँ। तो बहुत आप बड़े एक्टर सोचिए हैं। कि ये माध्यम जो है, ये माध्यम ऐसा नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक ड्राइवर ये कह रहा है संजय जी मैं देखता हूँ। कितने तमाम लोग हैं जो देश में दुनिया में देख रहे हैं, और कई सारे लोग तो वहां से संपर्क कर रहे हैं हमें अमेरिका से, जो लगातार फॉलोअर हैं, जो लगातार दर्शक हैं, सुझाव भी देते हैं और चीजें भी बताते हैं, और ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं जो देश में रहने वाला व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ तो डर भय का माहौल चल रहा है, वहां तो कोई डर है नहीं अमेरिका में। तो वहां से सही बात। सुझाव आते हैं और वो देखते हैं। जी बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरह दूर देश में लोग मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। शुरुआत करता हूँ बातचीत की। अमित शाह जी पिछले 15 दिनों से गायब हो गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि चश्मा लगा के देखो मेरे जैसा। वो रोज आते तो हैं पार्लियामेंट में, मतलब अपने दफ्तर में तो आते हैं, अब यहाँ पे संसद में बैठ के कोई इंसान बेवकूफ़ी की बातें करे बकौल उनके, मतलब उनके ख्यालों में, तो वो क्यों आएंगे? तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री को ये नहीं पता कि अपने दफ्तर में बैठ जाना और पार्लियामेंट के अंदर बहस में आने का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं कहूँगा केपी मलिक साहब, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किरण रिज्जू दो बार शायद राहुल गांधी के हाथ पैर जोड़ते रहे घंटे घंटे भर बैठ के कि साहब मान जाइए, लेकिन राहुल गांधी ने भी टके से जवाब दे दिया कि पहले चंदा चोरी, और अमित शाह से पूछेंगे हम हाउस में लाठी चलाई किसने, इतनी हिम्मत किसकी पड़ी, पैलेट गन किसने चलाया। अमित शाह के लिए शॉकिंग था क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भी समझ गए कि बिना अमित शाह के बुलाए काम चलेगा नहीं। उन्होंने किरण रिज्जू साहब से कहा बुलाइए, और सुना है कि अमित शाह की लोकसभा अध्यक्ष से बात हुई, अब जिल्ले लाही लोकसभा में आने को शायद तैयार हो गए हैं। किरण रिज्जू कहा कि जानते नहीं अमित शाह को, उनके नाम से आतंकवादी कांप जाते हैं, जब आएंगे तो बड़ा जम के बोलेंगे। लेकिन पहली बार अमित शाह डरे हैं, पहली बार मोहन भागवत डरे हैं, कह रहे हैं जैन जी तो बड़े अच्छे हैं, हमसे भी काबिल हैं। वो तो हैं ही है, मोहन भागवत जी आपसे ज़्यादा काबिल हैं, प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा काबिल हैं। तभी इन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके दिखा दिया। ये जैन जी हैं जब आपकी भी बैंड बजाने वाले हैं बहुत जल्दी। अमित शाह जी भाग खड़े हुए हैं इन जैन जी पे लाठी और गोली चलवाने के बाद। पुलिस ने चलाई तब भी जिम्मेदारी उन्हीं की है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चलवाने के बाद। मलिक साहब, राहुल गांधी की इलाहाबाद यात्रा पर रोक लगाई और फिर रोक हटाई। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने, हमारे भाषा में बड़ी खराब भाषा है वो, भूस भर दिया। तो इस सरकार में जैन जी ने और राहुल गांधी ने भूस भर दिया सरकार का। जो उन्हें गलतफहमी थी, तानाशाह को गलतफहमी होती है कि लोग बोलेंगे नहीं, लोग डरेंगे जेलों से, लाठी से, गोली से, तो इन नौजवानों ने सीना तान के खड़ा कर दिया कि तुम्हारी गोली कम पड़ जाएगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। और जो आज़ादी के आंदोलन का दौर था वो इन नौजवानों ने दिखा दिया। सलाम इस नौजवानों की ताकत को, और सलाम मोदी जी के और भागवत के डर को। डर अच्छा लगता है, गला आपका भी सूखता है। आपका क्या मानना है मलिक साहब? चाणक्य जी की चाणक्य नीति गायब हो गई। संजय जी, गला तो हमारा भी सूखता है, लेकिन हमने थोड़ा पानी पी लिया, उस तर हो गया, अपना तर रहता है। संजय जी देखिए, आपको ये देखना होगा कि हमारे जो 56 इंच की छाती वाले महामानव थे, वो तो कई बार गायब सदन से रह चुके हैं, वो तो कई बार डर गए हैं। वो बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी प्रोग्राम के पाकिस्तान जैसी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन उनको सदन में जाते हुए डर लग रहा है। ये पहली बार हुआ है कि जो हमारे चाणक्य थे, जिनसे देश के आतंकवादी, कश्मीर के आतंकवादी, बॉर्डर पे इस तरह के लोग घुसपैठे जो थर थर कांपते थे, जिसके नाम से वो कांप रहा है, हाउस के नाम पे थर थर कांप रहा है, हमारे युवाओं के नाम पे, जंतर मंतर के नाम पे, जैन जी के नाम पे थर थर कांप रहा है। और कहाँ गायब है पता नहीं लग रहा है। और बेशर्मी देखिए इनके मंत्रियों की। आप आज जो है कुल मिला के घुमा फिरा के जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ताधारी पार्टी है, उसके एकमात्र जो है कद्दावर, विद्वान और भारी भरकम नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिनके भरोसे छोड़ दी गई है पार्लियामेंट, किरण रिजिजू है। अरे भाई, किरण रिजिजू की भी तो एक लिमिट है। वो कितना संभालेंगे? वो कितना झेलेंगे? वो कहाँ-कहाँ जवाब देंगे? अब उनके मुंह से भी अल-बल निकलने लगा है संजय जी। आप ये देखिए कि कोई औसत बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात पे हंसेगा उनके सुन के, अरे वो तो रोज पार्लियामेंट में आ रहे हैं। मतलब क्या पार्लियामेंट का मतलब क्या? जो संसद का प्रांगण है, वो अपने कमरे में बैठते हैं जाके। पार्लियामेंट का मतलब तो हम सदन से समझते हैं, राज्यसभा का पटल है, लोकसभा का पटल है। वहां पे आप बयान देते हैं, तब तो मानते हैं पार्लियामेंट में गए हैं। पार्लियामेंट में तो माली भी आता है, पार्लियामेंट में तो चपरासी भी आते हैं, पार्लियामेंट में तो तमाम वहां पे जो पास चेक करने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी वाले, वो भी आते हैं। तो उनको तो कोई नहीं पूछ रहा, उनको तो कोई जानता नहीं है। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको जवाब देने हैं। आप छुप रहे हो जवाब से, और आपका बचाव उस प्रकार से हो रहा है कि आते तो हैं वो। तो ये तो इनके मंत्रियों का ज्ञान है। आप ये बताइए कि पार्लियामेंट में आपने मजाक बना रखा है दोनों ने मिलके कि अभी मंगल मिलन चल रहा है, होली मिलन शुरू कर दीजिए। अभी बैसाखी आ रही, बैसाखी शुरू कर दीजिए। अभी कावड़ चल रही, वहां शिवलिंग लगा दीजिए और वहीं कावड़ चढ़वाना शुरू कर दीजिए। बाकी काम तो आप कर ही रहे हैं ना। जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में काम होना चाहिए, वो आप संसद भवन के कमरे में बैठ के कर रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों से पिछले दिनों जितने मुख्यमंत्री आए हैं, सब मिलने के लिए पार्लियामेंट में आए हैं आपसे। तो आपने तो उसको अपना पार्टी का दफ्तर बना के रखा हुआ है, संसद भवन को। संसद भवन कहाँ रह गई है वो? संसद भवन में जितना पैसा रोज खर्च हो रहा है सिक्योरिटी पे, सिस्टम पे, पार्लियामेंट के भत्तों पे, तो उतना वसूल हो जाएगा। उसको क्या करिए, बड़े बड़े लोग वहां शादी ब्याह सम्मेलन करेंगे, उसको किराए पे लगा दीजिए। खाली तो पड़ी है, एसी भी चल रहा, सेंट्रल एसी है, इतनी बड़ी पार्किंग है। जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बन रहा है, दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। अगर कोई बाहर पूछे कि पार्लियामेंट से आपके प्रधानमंत्री भी गायब हैं और गृह मंत्री भी गायब हैं, और उसके बावजूद पार्लियामेंट चल रही है, बिल धड़ाधड़ पास हो रहे हैं और विपक्ष चिल्ला रहा है, क्या मजाक हो रहा है देश में? और लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लोगों को उलझा दे रहे हैं ये। और अब अवतरित हुए मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी 2 महीने होने वाले हैं। जो डकैती हुई थी अयोध्या में, राम मंदिर भगवान के घर में डकैती हो गई, उस डकैती पर गायब प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो हैं ही, वो भी थे मोहन भागवत जी गायब, अवतरित हुए एकाएक। और उनको चिंता जो है जैन जी की हो गई, भगवान राम की चिंता उनको अभी भी नहीं हुई। वो जैन जी की चिंता बता रहे हैं कि नहीं नहीं, जैन जी वाजिब थे, वाजिब जो है वो विरोध कर रहे थे, वाजिब आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात सुननी चाहिए थी। वकील हैं आप, आपसे कौन पूछ रहा है? आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? आप क्या बैक ओवर दे रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को? आप हैं कौन? जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो कब बोलेंगे? वो कब बताएंगे कि जैन जी ठीक कह रहे हैं? आप कौन है भाई? आप किस दायित्व से बोल रहे हैं? आपका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, आप तो चंदा भी नहीं लेते किसी से, आप तो रसीद भी नहीं कटवाते, तो आप हैं कौन? आप अपना एनजीओ चलाइए, आप अपना काम करिए, अपनी बिल्डिंगें बनवाइए, आप चंपत राय जी से मिलिए, उनसे गुफ्तगू करिए आप। ये कौन से आप कहा जैन जी के चक्कर में पड़ गए? ये कौन थे जैन जी जो 2000 आए थे? कहां कहां से आए थे? कौन लाया था? क्या इसमें बालिकाएं भी थी क्या? क्योंकि शायद आरएसएस में तो मेरी जानकारी के मुताबिक महिलाएं प्रतिबंधित हैं। तो जो 2000 बच्चे आए थे, उसमें बालक बालिका थे कि नहीं थे? या वो बालिकाएं सारी जंतर मंतर पे चली गई थी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बड़ी बेइज्जती कर दी थी? प्रधानमंत्री की तो इतनी इज्जत है कि उनकी बेइज्जती तो कोई कर ही नहीं सकता, और वो तो माफ कर देते हैं आके रील बना के। रील में तो वो माफ कर देते हैं और बाकी लोगों को लगा देते हैं पीछे कि चारों तरफ से इनको प्रताड़ित करो। तो ये देश में संजय जी जो चल रहा है, और आपने जो कहा है ना कि झुकाने वाला चाहिए, इसमें अब किसी को झुकाने की जरूरत नहीं, तो खुद ही झुक चुके हैं ये तो इतने झुक गए हैं अभी कि सामने वाले को ही शर्म आने लगी है। अब राहुल गांधी को अकेले को कुछ करने की जरूरत नहीं है संजय जी, आप देखिए। और इनकी किरकिरी हर जगह हो रही है। इन्होंने, अगर आप पिछला जो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम देहरादून में हुआ था, तमाम शाम दाम दंड भेद किए थे,
गायिकाएं और नचनियां बुलाई थी मुंबई से इन्होंने और फ्री टिकट कर दिए थे। उसी मैदान के बराबर में बड़ा पंडाल लगाया था इन्होंने। लेकिन ये युवा जो है वो नाच देखने और हीरोइन को देखने नहीं गया, वो बारिश में राहुल गांधी का भाषण सुनने गया। राहुल गांधी कोई ऐसे नहीं है कि मेरे बहुत लोकप्रिय नेता है और मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो सवाल उठा रहे हैं युवाओं का। बहुत सारे युवाओं की पसंद नहीं होंगे राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी वाजिब सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए सवाल उठा रहे हैं, इसलिए वो लोग सुनने गए। वही आपने वहां किया प्रयागराज में। जब पता लगा राहुल गांधी आएंगे और यहाँ पे भीड़ होगी तो प्रतिबंध लगा दीजिए। और इनको ये नहीं पता कि जिस जिस फिल्मों में प्रतिबंध लगता है उसकी गारंटी हो जाती है सुपरहिट होने की। अब हम चाह रहे हैं संजय जी की फिल्म पे अपना रोक लग जाए और सुपरहिट हो वो। ये कह रहे हैं हम जो है भाई साहब 20-25 जिलों में लॉन्च करेंगे यूपी के। अरे हम कह रहे हैं बिहारी कहेंगे हमारे यहाँ कब लगा रहे हो संजय जी, उत्तराखंड में लगा ही नहीं रहे आप। हरियाणा वाला कहेंगे यहाँ दिख ही नहीं रही है। वो ऐसी डिमांड हो जाएगी उसकी कि ऐसा क्या है इस फिल्म में कि सरकार डरी हुई है। जब डरी हुई है तो लोग देखेंगे। और भैया जिसको आप टैक्स फ्री ये हुआ करते हैं। नहीं संजय जी, अगर आप सरकार से जुगाड़ लगा के टैक्स फ्री करवा लें और कह दे भैया फ्री देखिए चंद पैसे में देखिए, कोई नहीं देखे उसको। मैं ये देख रहा हूँ कि बस मैंने तो अभी विधिवत अनाउंस नहीं किया था, लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी मेरी मूवी साहिया, SAHIY, साहिया साथी को कहते हैं, और बहुत शानदार कास्ट है इसमें। रिंग शांतनु मैशुरी है जो आलिया भट्ट के प्रेमी बने थे गंगूबाई में, और सैराट मूवी की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रिंकू राजगुरु हैं, नीरज कावी जी हैं, इश्तियाक हैं। तो मैंने तो विधिवत अनाउंस भी नहीं किया था अभी, बस सेंसर बोर्ड ने साहब रोक लगा दी। और KRK ने पता नहीं कैसे, उनको जानकारी कहाँ से मिली, उन्होंने वीडियो बना दिया। उसके बाद तो पूरे देश भर से जो मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए हैं KP मलिक साहब, मैं तो कह रहा हूँ करोड़ों रुपए मैं खर्च कर देता तब भी पिक्चर को प्रचार इतना नहीं मिलता। आज की तारीख में सहिया पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई। टाइम्स ऑफ इंडिया है, मिड डे है, आपका भास्कर है, नवभारत टाइम्स है, यानी कौन कौन से अखबार ऐसे हैं, मिंट है, सारे अखबारों में बड़े बड़ी जो बॉलीवुड की वायरल बिरयानी और जितने भी मानव और जितने भी इंस्टाग्राम में हैं, उन सब पे मेरी वो खबर चल रही है कि संजय शर्मा। ChatGPT भी डालिए आप, संजय शर्मा साहिया, तो कम से कम 50 साइडें खुल रही हैं। तो इन्होंने बैठे बिठाए, ये सरकार कभी जब चैनल बंद करती है, एक बार बंद किया हम सुप्रीम कोर्ट गए, जाना पड़ा, वहाँ से खुला, एक बार बंद किया हाई कोर्ट से जाना पड़ा, लेकिन जब बंद करती है तो 5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। जब अंजना ओम कश्यप ने मुझ पर जिस दिन मुकदमा किया टीचरों, खान सर को, बाकी टीचरों के साथ, उस दिन एक दिन में मेरे हजारों लाखों सब्सक्राइबर, 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़े। तो मेरे ऊपर जब ये हमला करती है सरकार तो मुझे फ़ायदा होता है। सेंसर बोर्ड अगर नहीं रोक लगाता तो मुझे लोगों को बताने में बहुत पैसा खर्च हो जाता, भाई मैंने बड़ी जान लगा के साहिया मूवी बनाई है, आप देख लेना। लेकिन सेंसर बोर्ड ने कमाल कर दिया। ऐसे इन नौजवानों को अगर ये प्रदर्शन कर लेने देते तो कुछ नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान आज भी शिक्षा मंत्री बने होते, इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। लेकिन होता इनकी औकात क्या है, इनकी औकात ये हमसे बोलेंगे, हमसे सीमा मांगेंगे, मारो लाठी, चलाओ गोली, बिहार में चलाओ AK-47। लेकिन ये भूल गए कि हिटलर का अंत कैसे हुआ था। कभी थोड़ा इतिहास नहीं पढ़ा इन्होंने कि किस तरह एक तब बड़े तानाशाह ने दुनिया की आत्महत्या करी थी। मैं भारत के किसी तानाशाह की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लंबी उम्र हो, वो तानाशाही भारत में तो की तानाशाह तरह, होते भी नहीं है, वो तो जर्मनी में हाँ होते हैं। होते भी नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र की आड़ में छुपा हुआ चेहरा तानाशाह का होता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ आराम से आपका रिटायरमेंट, पीते आप मोर को दाना खिलाते रहें। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है इन नौजवानों से, इन राहुल गांधी के तेवरों से। मोदी और शाह डरते, ये तो समझ में आता है, डर गए भी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, वो मोदी के अहंकार का इस्तीफा हुआ, वो शाह के घमंड का इस्तीफा हुआ। पूरी वो सरकार की सत्ता की चुनौती बनाने के बाद इस्तीफा हुआ, तो सारा घमंड चूर चूर हो गया। ये लोग डरे, समझ में आता है भाई, आज उनका इस्तीफा हुआ, कल हमारा भी इस्तीफा हो सकता है। लेकिन मोहन भागवत इतना क्यों डर गए? इसलिए कि नौजवानों ने कहा कि मनुवाद इस देश का सबसे खराब ग्रंथ है। बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जय भीम के नारे लगाए, और ये सवाल पूछने लगे कि संघ का प्रमुख ब्राह्मण ही क्यों होगा, ब्राह्मणों में से कौन से सुरखाव के पर लगे हैं। तो क्या भागवत को समझ में आ गया कि अगर नौजवान ये सामाजिक बराबरी की बात करने लगे। और बड़ी बढ़िया बात यह है कि अभिजीत दलित समुदाय से आते हैं और मंच पे नारा लगाने वाला जय भीम ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों ने भी अपनी सीमाएं
तोड़ दी और खुद कहा, मैं खुद ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ और मैं आलोचना करता हूँ, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ इस दुनिया का सबसे घृणित, सबसे नफरत, सबसे दो कौड़ी का कोई ग्रंथ है तो वो मनुस्मृति है। तो मैं ब्राह्मण होकर कह रहा हूँ कि जब किसी, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी शूद्र के कान में वेद के मंत्र पड़ गए तो उसमें तेजाब डाल देना चाहिए, ऐसी कुछ कुछ बातें हैं। मैं इतने घटिया पुस्तक को कभी पढ़ना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने जितना सुना है उसके बारे में उसमें है, तो मैं ऐसे ग्रंथ को जलाना ही पसंद करूँगा। मैं कभी नहीं ब्राह्मण होकर चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर आप मूल्यांकन करें। ऐसा धर्म, ऐसे ग्रंथ मेरे लिए दो कौड़ी के हैं जो व्यक्तियों में बंटवारा करें। लेकिन मेरी तो औकात क्या, इतनी तो हैसियत नहीं है, लेकिन अभिजीत के मंच पे, एक दलित के मंच पे ब्राह्मण जो मैं कह रहा हूँ वो बात ब्राह्मण कह रहा है। मोहन भागवत को समझ में आ गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ भी हार जाता है अपना, रविशंकर प्रसाद भी बूथ हार जाते हैं जहाँ पे ऊंची जाति को का बोल वाला है, कुर्मी भी वोट नहीं देते हैं। तो क्या मोहन भागवत को समझ में आ गया कि जैन जी की अगर ये मांग हो गई कि आरएसएस का चीफ दलित तो पिछड़ा होगा तो हिल जाएंगी चूल्हे नागपुर की भी? क्या इसी डर की वजह से मोहन भागवत का गला सूखा और उन्हें सफाई देनी पड़ी?